So initially, yesterday we discussed what is work of a force, in which we considered various types of forces. First of all, we considered a variable force, then a constant force, weight, and then the spring force as well as the friction force. So we calculated the work done due to all these four or five types of forces. So if we summarize yesterday's lecture, first of all, work done को हम represent करते हैं capital U के साथ. So for a variable force, this work done is going to be equal to integral S1 till S2 f of s, which is the function, which is the function of that variable force f of s, cos theta into ds. So whenever you have a variable force से क्या मुराद है कि its magnitude is changing. Generally that function of f with respect to s is given to you. So if f of s is given to you and you are being asked to find out the work done due to this variable force, then it is going to be fs cos theta into ds, और आप इसको integrate कर लेंगे within the limits from s1 to s2 in order to find out the work done. Now this term which is cos theta, ये हमने क्यों शामिल किया? Because if the force is not acting along the displacement axis, then we need to have the component of force along their displacement axis. तो उस component के लिए फिर हम cos theta जो angle है f और displacement axis के दरमियान उसको जो है वो शामिल करते हैं. However, if the force is acting along that displacement axis, तो फिर आपको इस cos theta की जरूरत नहीं पड़ती है. So this is how you can find out the work done by a variable force by simply integrating this function. For example, आपको अगर f of s जो है यानी force जो है वो given थी in terms of s, which is s square plus 2s. So suppose ये आपके पास force थी in terms of say Newton. So in order to find out the work done due to this force, you are basically going to integrate this function within the limits from s1 to s2 in order to find out the work done. Then the second force which we considered was a constant force. So work done by constant force, as we have discussed yesterday, कि अगर ये fs के बजाय एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स एक्ट कर रही हो, तो देन इन दैट केस सिंस f is constant, cos theta is constant, so we will take this f cos theta outside this integration sign. So this is f cos theta. So integrating ds would give you s2 minus s1 or simply delta s. So whenever you have a constant force acting on that particle, the work done due to that constant force is going to be f cos theta into delta s. Again, cos theta is going to be included if force is not acting in line with the displacement. Rather, it is acting at an angle theta with respect to the displacement axis. So we are going to take the component of force which is in line with that displacement. So that's why we are taking f cos theta. Okay, now in both these cases, the work done by variable force or a constant force can either be positive or it is going to be negative, depending कि ये जो force है या ये जो force है और ये जो displacement है, they are along the same axis. So if they are along the same axis, the work done is going to be a positive quantity. If they are opposite to each other, that is 180 degrees apart, then the work done is going to be negative quantity. So depending upon कि force कहाँ act कर रही है और displacement किस direction में हो रही है, you are going to decide कि work done is going to be positive or work done is going to be negative. The third thing which we discussed yesterday was the weight of this particle. So work done due to weight, UW जिसको हम कहते हैं, it would have a magnitude of W times delta y, where w is the weight of the particle and delta y is the vertical displacement which that weight has undergone between position 1 and position 2. So अगर तो vertically weight displace नहीं हो रहा, यानी particle जो है वो horizontally move करे, तो then the work done due to weight is going to be 0. However, if the particle has undergone some vertical displacement delta y, in that case the magnitude of work done due to weight is going to be w times delta y. Now, is it going to be positive or negative? That depends upon this delta y, because weight would always be acting downward. So if delta y is also acting downward, then since weight and delta y are along the same axis, the work done due to weight is going to be a positive quantity. However, if delta y is in the upward direction, that is opposite to the direction in which the weight is acting, then for that case, the work done due to weight is going to be a negative quantity. So work done due to weight would have a magnitude of w times delta y, and it can be either positive or negative depending upon the direction of delta y. If delta y is acting along the same axis as w, then it is positive. Otherwise, it is going to be a negative quantity. Okay, the fourth force which we considered yesterday was the spring force. So work done due to spring force would be equal to, by formula, it is minus half k s2 square minus half k s1 square. So this is going to be the work done due to a spring force. Here S2 and S1 basically represents the deformation in springs from its unstretched position at position 1 and position 2. In other words, this S2 is basically L2 this S2 is basically
L2 minus L naught. So if we write it here, this is basically L2 minus L naught. Similarly, this S1 is basically L1 minus L naught के position 1 और position 2 के ऊपर ये spring कितना अपनी unstretched position से displace हुआ है. These are basically S1 and S2. So in this formula, depending upon the value of S1 and S2, you can have positive or negative work done by spring force. उस हवाले से आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप S1 और S2 की करेक्ट वैल्यूज डालें, ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. So these are the four forces which we considered yesterday and we calculated the work done due to these four forces. So any query, I hope कि कल हमने तमाम queries को address कर लिया था. So today we are going to move forward and we are going to solve one example which is 14-1 in which all these forces are acting and we need to find out the work done due to these forces. So I hope that example 14-1 slide is visible to all of you. Okay, first of all, reading the statement of this example, you have a 10 kg block shown which rests on a smooth incline. So for simplicity, it is given to you that the incline plane is smooth, so we are not going to include friction in this case here. So if the spring is originally stretched 0.5 meters, so initially this particle is located at this position. Let us say that this is our position number 1, and at this position the spring is already stretched 0.5 meters. So इस पोजीशन के ऊपर जो पोजीशन 1 है, स्प्रिंग जो है वो 0.5 मीटर ऑलरेडी अपनी न्यूट्रल पोजीशन से स्ट्रेच हुआ हुआ है. आप करते क्या है कि यू अप्लाई हॉरिजॉन्टल फोर्स P, which is equal to 400 Newton on this particle. As a result of this force, this particle is going to move up that incline. So once this particle has traveled a distance of 2 meters up that incline, so our position 2 would be this position when this particle has traveled a distance of 2 meters from position 1 up this incline. You need to find out the work done by all the forces acting on the block as shown to you in the figure. So due to the application of this horizontal force P, the particle is going to move upward a distance of 2 meters. You need to find out the work done by all the forces acting on this particle. So starting with drawing the free body diagram of this particle. So let us draw the free body diagram of this particle. So in order to draw the free body diagram, the weight of this particle would be acting vertically downward. Then you have a force of 400 Newton, applied force P, 400 Newton, which is acting along the x-axis. Then there is going to be a normal reaction force. Why we are going to have a normal reaction force? Because we are going to remove this inclined plane. So once we remove this inclined plane, we are going to get a normal reaction force, which will be acting perpendicular to the contacting surface between the particle and the inclined plane. So these are the three forces which we can identify. Can you identify some more forces which we need to draw on the free body diagram? No, sir. Are you sure? What about the spring? Spring force include, yes sir, towards the spring होगा. So spring force भी आएगी. So spring force क्या होगी? Up that incline होगी या down the incline होगी? Down incline. Up the incline. Why up the incline? Spring जब stretch होता है, so what does this spring force act? It would act in a direction to move the spring back to its unstretched position. So चूंकि position 1 पे already spring stretch हुआ हुआ है, इसको आप मजीद stretch कर रहे हैं to position 2. So the spring force would act in this direction. That is, it is going to act downward in order to restore this spring to its neutral position, isn't it? Yes, sir. Okay, so these are the four forces which would be acting on this particle. What about force of friction? Smoother तो नहीं होगी force of Okay, friction. so since it is given that the incline is smooth, so friction force would not be acting. However, if the incline is not smooth, then the friction force is going to act down the incline, that is opposite to the motion direction or opposite to the relative motion. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, so since friction force is not involved here, so let us move to the solution of this problem. कि अभी हमने जिस तरह बात की, this is going to be the free body diagram which is shown to you here on the lower right side of this slide. The free body diagram which we constructed in the previous slide. So these are the forces. One is the applied force, friction. One is the applied force. The other one is the spring force, normal reaction force, and the weight which would be acting downward. Okay, now one by one we are going to calculate the work done due to all these forces which are being involved here. Starting with the horizontal force P. What should be the work done due to this horizontal force P? Can any one of you tell me? P into horizontal जितना distance recover किया सर वो 0.5 cos 30 आएगा.
this is our position number 1. This is our position number 2. So from 1 to 2, what is going to be the work done due to this applied force? It is going to be that applied force multiplied by displacement. However, since P and S are not along the same axis, so either we are going to consider the component of P along the direction of displacement, or we are going to consider the component of displacement in the direction of force. So as per our discussion, it is going to be 400 cos of 30 into displacement, which is 2. So we are resolving force along the displacement axis. So basically हम force का ये वाला component जो है वो consider कर रहे हैं, which is 400 cos of 30 and multiplying it with displacement, which is 2 meters between position 1 and 2. So 2 आपके पास multiply के लिए ऐसा जाएगा. Should it be positive or negative? Positive, sir. Positive, because the component of P and displacement are along the same axis. So the work done is going to be a positive quantity in this case. So UP should be equal to 400 cos 30 into 2 or 400 into 2 cos 30, whichever way you want to interpret it. So the work done would comes out to be 692.8 joules. ये आपके पास work done आ जाएगा due to this applied force. Any query regarding this work done due to applied horizontal force P? कोई query तो नहीं है किसी की? No, sir. Okay, moving towards the second force, which is the spring force. Now, as we have discussed earlier, that the work done due to spring force is minus half k s2 square minus half k s1 square. So, अगर हम थोड़ा सा उसको recall करें, spring force के लिए हमने work कहा था, it is going to be equal to minus half k s2 square minus half k s1 square. Can you identify K? तो हमें known है K is basically 30 newtons per meter, which is the spring constant. What about S2 and S1? अगर मैं position 1 की बात करूं, तो position 1 के ऊपर spring अपनी unstretched position से कितना displace हुआ हुआ है? Do you remember that? 1.5. 0.5, sir. If we take a look at the question, or at position 1, the spring is being stretched 0.5 meters from its unstretched position. So it means that S1 आपका 0.5 हो जाएगा. Is this point clear to all of you? S1 किसको represent करता है? Position 1 के ऊपर spring अपनी unstretched position पे कितना displace हुआ हुआ है अपनी unstretched position से. So already question में given है कि at position 1 the spring is displaced from its neutral position by 0.5 meters. So आपके पास S1 जो है वो 0.5 हो जाएगा. Is this point clear to all of you? Yeah. Okay, what about S2? Already यहाँ तक 0.5 displace था. आप मजीद इसको 2 meters move करते हैं from position 1 to position 2. So what should be S2 then? 2.5. It is going to be 2.5. Now since S2 is greater than S1, और वो हमें वैसे भी नजर आ रहा है कि देखें spring force act कर रही है in this direction. Displacement आपकी हो रही है in this direction. So work done due to spring force is going to be a negative quantity. वो वैसे भी फिर जब हम values S1 और S2 की डालेंगे 2.5 and 0.5, then the work done due to spring force is going to be a negative quantity, which is going to be minus 90 joules. Is this point clear? ये कल आप में से एक का सवाल भी था, तो मैंने कहा था कि हम एग्जाम्पल 14-1 करेंगे, तो आपको थोड़ा सा S1 और S2 के हवाले से क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी. सो आई होप कि जिसका भी क्वेश्चन था उसको ये क्लियर हो गया होगा, या अगर नहीं भी क्लियर तो आप दोबारा पूछ सकते हैं. सर ये 2.5 क्यों 2 क्यों नहीं आया? 2 क्यों नहीं आए? देखिए हमने कहा क्या था, S2 किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? व्हाट डज दिस S2 रिप्रेजेंट्स? पोजीशन 2 के ऊपर ये अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ हुआ है. इन अदर वर्ड्स इट इज बेसिकली L2 minus L0, where L2 is the length of the spring at position 2 and L0 is the unstretched length of the spring. ठीक है, अब यहाँ हमें unstretched length तो नहीं गिवन, लेकिन हमें इतना गिवन है कि once this spring or once this particle is at position 1, ये spring already जो है वो 0.5 meters जो है वो अपनी unstretched position से stretch हुआ हुआ है. आप यहाँ से इसको मजीद 2 meters आगे move कर दें तो total stretch कितनी आ जाएगी? It is going to be 2 plus 0.5, which is 2.5 meters at position 2. Is it clear? Okay, sir. Okay, the other force which is acting here is the weight of this particle. So what should be the work done due to weight? Can you identify it? W times delta y होगा. हमेशा जब भी weight की वजह से work आता है तो it is going to be W times delta y as far as the magnitude is concerned. W आपका कितना होगा? It is 98.1 Newton. What about delta y? Vertically कितना weight displace हो रहा है between position 1 and position 2? It is going to be 2 sine of 30, isn't it? Yes, sir. So delta y is 2 sine of 30. Weight is acting downward. What is the direction of delta y between position 1 and 2?
Upward or downward delta y? Upward. Upward. So weight is acting downward, delta y is upward. So what should be the sign of UW? Positive, negative? Negative. Negative, since W and delta y are opposite to each other. So work done due to weight would be minus W times delta y. So minus 98.1 into delta y, which is 2 sine of 30. It will give you the work done due to weight to be minus 98.1 joules. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, finally, the last force is the normal reaction force, which is NV. So what is the work done due to this normal reaction force? Can you identify it? Zero, sir. Zero. Why zero? Because this normal reaction force is acting perpendicular to the direction of displacement. So if any force is acting perpendicular to the direction of displacement, then cos 90 is going to be equal to zero. That's why the work done due to this normal reaction force is going to be zero. Okay, so the overall or the total work done by all the forces in moving this particle from position 1 to position 2 is going to be the algebraic sum of all these 4 work done. So taking the algebraic sum, the overall or the total work done is going to be 505 joules. Is this point clear to all of you? Because some work done are positive, some are negative. So the total work done is going to be the algebraic sum of all these work done. So it is going to be 505 joules. So this is how you can calculate the work done due to various forces being involved here. Now just a little change. Okay, if the surface is not going to be a smooth surface, then what should be the direction of force of friction then? It is going to act down the incline, isn't it? Yes, sir. Okay. So in that case, what should be the work done due to force of friction? Can you identify that work done? सर नॉर्मल रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ उसको Okay, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से म्यू एनसी आ गया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 cos थीटा आर यू श्योर? सर 2 से नहीं करेंगे 2 से ही करेंगे सर Simply 2 से करेंगे, cos theta नहीं आएगा because this friction force and displacement are along the same axis, so we don't need to include cos theta here in this term. Should this work done going to be positive or negative quantity? Negative, sir. Negative, since force of friction is acting downward and S is going to act upward, so UFF is going to be minus mu NC into 2. Is this point clear to all of you? Yes, sir. अगर फ्रिक्शन होती तो ये वर्क डन आता, बट सिंस द प्लेन इज स्मूथ, सो वी हैव नॉट इंक्लूड द वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. Okay, so moving forward to our main topic, which is the principle of work and energy. As we have already said that this whole chapter can be subdivided into 2 major topics. One is this principle of work and energy, and the other one is the conservation of energy principle. Principle of work and energy हम आज cover करेंगे, और इंशाल्लाह conservation of energy वाला जो principle है, that is going to be covered in next week lecture. Okay, now in order to understand this principle of work and energy, let us consider a particle which is located on the path defined relative to an inertial coordinate system. So this particle is moving on this path shown to you as blue path here. If m is the mass of the particle and is subjected to a system of external forces represented by Fr equal to summation Fn. So आपके पास क्या है कि ये particle जो है वो मुख्तलिफ forces के ऊपर act कर रही है, and the total unbalanced force acting on the particle is being represented here as summation F. What we have done here is we have resolved this summation F into its 2 components. One is this component which is along the tangential axis and it is represented here as summation Ft. The other one is the normal component which is being represented here as summation Fn. So as far as this force is concerned, it is being resolved into its 2 components along the tangential and normal axis. So if m is the mass of the particle and it is subjected to a system of external forces represented here as Fr equal to summation F, then the equation of motion for the particle along the tangential axis can be written as we have discussed earlier in the previous chapter. Summation Ft should be equal to mat. So we have written the equation of motion along the tangential axis to be equal to summation Ft equal to mat. Now from kinematics of a particle in terms of its normal and tangential coordinate system, we know that at ds is basically equal to v dv. So we can write at to be equal to v dv over ds. ठीक है, हमें काइनेमेटिक्स से पता है कि at ds जो है वो v dv के बराबर होता है, so at would be equal to v dv over ds. So putting the value of at here as v dv over ds and then taking ds towards the left hand side, this equation would become summation ft ds equal to mv dv. Isn't it? ऐसे ही बनेगा ये इक्वेशन. क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes. Okay. Now integrating this equation on both sides from S1 to S2 since ds is involved here, and from V1 to V2 since we are integrating it with respect to velocity. Now, what does this left hand side of this equation indicates? Force into displacement. What does this represent? Work done. It basically represents what is the work done on this particle by various forces in moving it from position 1 to position 2. On the right hand side, it is mv/dv. So mass is constant. इसको हम बाहर ले जाएंगे. V का integral with respect to dv क्या हो जाएगा? 1/2 v square. 1/2 v square. और जब हम इंटीग्रेशन की वैल्यूज डालेंगे from v1 to v2, it would become half m v2 square minus half m v1 square. ऐसे ही है? Yes, sir. Yes. Okay. So what does this half mv square represents? Kinetic energy. It represents the kinetic energy. So whenever in this book the term kinetic energy is going to be represented, kinetic energy को हम represent करते हैं using the alphabet T. जिस तरह work done के लिए हमने alphabet U इस्तेमाल किया, kinetic energy को represent करने के लिए इस book में जो alphabet इस्तेमाल हुआ है वो T का word है. So if we take a look at this equation broadly, it would be summation u1 to 2, which is the work done by all the forces in moving this particle from position 1 to position 2 should be equal to half mv2 square, जिसको मैंने कहा kinetic energy मैं T2 से represent करता हूँ, minus T1 जो कि kinetic energy at position 1 है. और rearranging this equation, this would become T1 plus summation u1 to 2 equal to T2. So ये मेरे पास जो equation आई है T1 plus summation u1 to 2 equal to T2. This equation is basically termed as the principle of work and energy. What does this principle indicates? This principle indicates कि हम जिस तरह अभी बात करें ये हम उस इक्वेशन में पहुंचे हैं T1 plus summation u1 to 2 equal to T2. This principle states that the particle's initial kinetic energy at position 1 plus sum of work done by all the forces that are acting on the particle from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of the particle. So this is our principle of work and energy, जो कि कहता है कि उस particle की जितनी भी initial kinetic energy है plus उस पे जितनी भी forces की वजह से work done आ रहा है between position 1 and position 2 should be equal to the final kinetic energy of the पार्टिकल. अगर मैं इसमें मुख्तलिफ टर्म्स जो इन्वॉल्व हैं उनको देखूं तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है काइनेमेटिक्स का वो वेलोसिटी है. इसके अलावा आपकी ये जो दरमियान वाली टर्म है समेशन यू 1 to 2 वर्क डन वाली टर्म, वर्क डन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी गिव्स यू अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफ वी एन एस, फोर्सेस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. जब जब आपको किसी भी प्रॉब्लम में फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप चाहिए तो आप उस प्रॉब्लम के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी को अप्लाई करके डायरेक्ट सिंगल स्टेप में सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं. So this is the principle of work and energy which states that the initial kinetic energy of a particle plus work done by various forces in moving that particle from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of the particle. Now this principle of work and energy is applicable to a single particle or it can be applied to a system of particles as well. System of particles से क्या मुराद है कि आपके पास दो particles हैं जिनको आपने ropes और पुलिस के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है. So you can apply this principle on that overall system as well. जब आप सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो this would become summation T1 which represents the total kinetic energy of the system at position 1 plus summation u1 to 2 which is the sum of all the forces, the sum of work done by all the forces in moving that system from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of the system which is summation T2. So this is the principle of work and energy being applied on a system of particle. जब हम system consider कर रहे हैं तो फिर हम individual particle के बजाय system की initial kinetic energy plus system के ऊपर जितना भी work done होगा मुख्तलिफ forces की वजह से that should be equal to the final kinetic energy of the system. Is this principle of work and energy clear to all of you? किसी को कोई doubt इस principle of work and energy से? Clear, sir. Okay. What about we have included kinetic energies here as T1 and T2. What about the potential energies? We haven't included it here, isn't it? Yes, sir. Yes, So where are those potential energies? जो अभी जो केस हम डिस्कस कर रहे थे वो उसमें ग्रेविटी थी नहीं. अच्छा चलें, अगर ग्रेविटी आएगी तो आप इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई करेंगे. तो इसी में आगे लिख. अच्छा मुझे एक और बात बताएं, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? सर वो हाइट से वेरी करती है. हम तो हाइट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे हैं. यार देखो किसने कहा अगर आपका वेट वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है तो हो सकता है कि हाइट भी चेंज हो रही हो, फिर क्या होगा?
इस समेशन जो 1 to 2 के अंदर इंक्लूडेड है। बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क। तो अभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसी वर्क की फॉर्म में इस इक्वेशन में ऑलरेडी शामिल हो रही है। अगले टॉपिक में हम करेंगे क्या कि हम इस वर्क को रिप्लेस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म से और हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा, जिसमें वर्क एग्जिट हो जाएगा और उसकी जगह पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जो है वो शामिल हो जाएंगी। सो फॉर द टाइम बीइंग आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज बेसिकली द पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो वर्क वाली टर्म में ऑलरेडी वो पोटेंशियल एनर्जी है वो शामिल है। अगले टॉपिक में हम इसी वर्क वाली टर्म को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला प्रिंसिपल बन जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now, before moving on to the various problems relevant to this principle of work and energy, इस बुक में इन्होंने क्या किया है कि वर्क एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी के प्रॉब्लम्स अलग से दिए हैं, उसके बाद दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है पावर और एफिशिएंसी की, और उसके प्रॉब्लम्स अलग से दिए हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी स्लाइड्स में बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम और इतना कोई वो अहम टॉपिक भी नहीं है पावर एंड एफिशिएंसी, तो मैंने वर्क एंड एनर्जी के साथ ही पावर और एफिशिएंसी को कंबाइन कर दिया। सो लेट अस टेक अ लुक एट दोस टू डेफिनेशंस और फिर हम इनके प्रॉब्लम्स एक साथ जो है वो इन दोनों टॉपिक्स के हल कर रहे होंगे। ओके, हाउ डू यू डिफाइन पावर? पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम। सो अगर मैं वर्क को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, आई एम गोइंग टू गेट पावर। सो du over dt is going to be the power, but we know that du, which is work done, it is being represented by the dot product of f and dr. So du के बजाय मैं f dot dr लिखूं तो ये dr by dt रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो जब जब आपसे कहा जाए कि किसी भी स्टेज पे पावर फाइंड आउट करें, इट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी वुड बी पावर। फोर्स के यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। So the units of force are Newton. What about velocity unit? It is meter per second. So power is basically Newton meter per second. And we know that Newton meter को हम represent करते हैं joule से. So joule per second को से हम power जो है वो units define करते हैं. And that unit is basically watt. So watt is basically equal to 1 joule per second. Generally units convert नहीं करवाए जाते, लेकिन however if you want to measure power in terms of horsepower, so this is the conversion factor or conversion equation for converting horsepower into watts and feet pound per second or vice versa. So 1 horsepower is equal to 746 watt and it is equal to 550 foot pound per second. Generally ये conversion इस्तेमाल नहीं होती, कहीं आपको अगर power watts में given है तो आप आंसर भी watts में ही देंगे, लेकिन इन केस की कहीं आपको convert करना पड़ जाए तो you can use this relationship where 1 horsepower is equal to 746 watt and that is equal to 550 foot pound per second. ये conversion कहाँ से आई? I hope कि आपको metric FSC की physics याद होगी जिसमें आपने इस power को convert किया था. So whenever in any problem you are being asked to determine the power, it is going to be force into velocity. उस पॉइंट पे जितनी फोर्स गिवन है और उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द पावर। एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज की? आउटपुट ओवर इनपुट। Output over input. So since we are talking about mechanical efficiency here, so it can be either power output over power input or it can be energy output over energy input. तो जो भी आपको terms given हो, अगर power की form में given है, so you are going to define efficiency as power output over power input, और in terms of energy अगर आपको चीजें given है तो you can define efficiency as energy output over energy input. Generally इस book में ज्यादा चूंकि power के ऊपर focus होता है तो आप power output over power input से efficiency को जो है वो define कर रहे होते हैं. Are these two definitions clear to all of you? यस सर। तो चूंकि बुक में मैंने जिस तरह शुरू में कहा इन दो डेफिनेशंस को अलग से डिफाइन करके उनके प्रॉब्लम्स अलग से दिए हुए थे, आई हैव कंबाइंड बोथ द टॉपिक्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी अलोंग विद पावर एंड एफिशिएंसी, और आपको कंबाइन इन दोनों टॉपिक्स के एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स यहाँ नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रॉब्लम्स और एग्जांपल की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है बिकॉज दे आर बेसिकली रेलिवेंट टू टू टॉपिक्स रादर देन वन टॉपिक। अब क्लास में आज हम कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हम अपनी हो सकता है अगर आज ना कर सके तो नेक्स्ट टाइम वाली क्लास के लिए जो है वो छोड़ देंगे और नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला प्रिंसिपल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। Is this point clear to all of you? Shall we move on to the first example? Yes, sir. Yes, sir. Okay, starting with first example, example 14-1 तो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है जिसमें वो मुख्तलिफ फोर्सेज एक्ट कर रही थी जो आज हमने की है। उसके बाद starting with example 14-2 in which you have an automobile which has a weight of 3,500 pounds and it is traveling down this 10-degree incline road at a speed of 20 feet per second. So this car is traveling down the incline at a speed of 20 feet per second. If the driver jams on the brake, so suddenly the driver pushes the brake pedal, जिसकी वजह से causing his wheels to lock down, कि आपके पास जो कार के व्हील्स हैं वो लॉक हो जाएंगे and the car is going to skid on this road, or because of the friction between the tires and the road, the speed of this car is going to decrease until it stops. So you need to find out कि how far s
his tires skid on the road before stopping. The coefficient of friction between the wheels and the road is given to you as 0.5. So आपके पास एक car है which is traveling down the incline at an speed of 20 feet per second. Suddenly, the driver applies brakes, causing his car wheels to lock. You need to find out how long this car is going to skid on this road before it is being stopped. Coefficient of friction जो है between the car tires and the road is given to you as 0.5. So अगर broadly मैं इस problem को देखूं, so car की speed यानी velocity यहाँ involve है जो कि 20 feet per second है. उसके अलावा किसी डिस्टेंस s तक ये स्किड कर रही है, इट मींस कि s जो है वो इन्वॉल्व है और साथ साथ फोर्सेस तो इन्वॉल्व होंगी, फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, वेट इन्वॉल्व है. सो आपके पास f v और s तीनों चीजें यहाँ इन्वॉल्व हैं. सो अगर आप तीनों काइनेटिक्स के प्रिंसिपल पढ़ चुके होते, आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद द शॉर्टेस्ट मेथड टू यूज हियर, since f, s and v are involved here, so work energy principle is going to give you the shortest solution. Although this problem can also be solved using the equation of motion, but since f, v and s are being involved here, so work energy principle would give you a more direct solution as compared to the equation of motion. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now first of all, drawing the free body diagram of this car. कि अगर मैं इस कार की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये मेरी एक्सिस हैं जो मैंने डिफाइन की हैं. से दिस इंक्लाइन एक्सिस को मैं अपनी एक्स एक्सिस कह देता हूँ. So this inclined axis being termed as x axis, perpendicular to that inclined axis is basically my y axis. Okay, now showing the various forces which are acting on this car. One is going to be the weight of this car, which would be acting vertically downward. Then once you remove this inclined plane, you are going to get a normal reaction force acting in this particular direction. So these are the two forces which would be acting on this car. Is there any other force that is acting on the car? It is the friction between the tires and the road. So in what direction that force of friction act? Upwards or inclined? Upwards or inclined plane. So up that inclined plane, you are going to have this force of friction, Fs. So these are the three forces that would be acting on this car. So आपके पास ये तमाम forces जो है वो यहाँ involved हैं. As far as the axis angle of W is concerned, it is going to be 10 degrees with respect to the normal axis. So ये आपके पास free body diagram जो है वो complete हो गई है. Okay, so let us say कि this is my position 1 जिसके ऊपर brakes apply किए जाते हैं, and this is my position 2 जिस पे आके कार जो है वो रुक रही है after covering a distance of s on this inclined road. So position 1 is the position where this car is traveling at 20 feet per second and the brakes are being applied. Position 2 is a position where this car stops on this inclined road. Okay, एक और चीज जो मैंने आपसे कल शेयर की थी वो ये कि जो work energy principle है, since work is a scalar quantity, energy is a scalar quantity, so this work energy principle जब आप apply करते हैं, it is not going to be applied along some axis with reference to some coordinate system. Rather, since both work and energy are scalar quantities, so you apply this work energy principle or conservation of energy principle between two positions. Here, these two positions are shown to you as position 1 and position 2. इसके मुकाबले में अगर हम equation of motion की बात करें, तो since equation of motion is a vector equation, so वो equation आप हमेशा किसी ना किसी axis के along कोई coordinate system में apply करते हैं. इसके मुकाबले में work energy चूंकि scalar quantities हैं, so it is going to be applied between two positions rather than along some axis. Okay, so we are going to apply the principle of work and energy on this car between position 1 and position 2. So applying the principle of work and energy, it says that the initial kinetic energy of the car plus work done by all the forces which are acting on the car between position 1 and position 2 should be equal to the final kinetic energy of the car. So this is the principle of work and energy. We are going to evaluate each and every term one by one. First of all, starting with the initial kinetic energy. What is the initial kinetic energy of this car? Half mv square, v20 है sir. Half mv square, so v is 20. What about m? 3,500 pounds. So is it m? सर वो तो वेट है ना सर, डिवाइड करना है. So 3,500 को 32.2 पे डिवाइड करेंगे, so we will get the mass of this automobile. So half m20 square would give us the initial kinetic energy of the car. What about the final kinetic energy? What is the velocity of this car at position 2? 0. So since the velocity of this car at position 2 is 0, so accordingly the final kinetic energy of this car at position 2 is going to be 0. So this term T2 would be equal to 0. Okay, now since here the force of friction is also involved, force of friction by formula किसके बराबर होती है? So normal reaction into coefficient of friction. Okay, mu NC के बराबर होती है. So do you know the value of NC here? सर निकाली जा सकती है. कैसे निकाली जा सकती है?
तो W cos 10 करेंगे तो वो NC के बराबर ही होगी। सो कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हैं? तो वर्टिकल फोर्सेस जो है वो इक्वल होंगी ना, तो So I am basically applying the equation of motion. देखिए टेक्निकल टर्म्स में बात किया करें. So I am applying the equation of motion on this particle along the y-axis. So summation Fy equal to 0 since the particle is moving along the x-axis. जो मेरी x-axis define हुई हुई है, that is along the incline. So summation Fy would be equal to 0. That will give me NC to be equal to W cos of 10. ठीक है. So W cos 10 मेरे पास NC आ जाएगा. अब मैं force of friction जो है वो निकाल सकता हूँ. Okay, now coming to the forces which are going to be involved in this summation U 1 to 2 work done. कौन सी forces work done की तरफ contribute कर रही होंगी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट NC के हवाले से क्या ख्याल है? सर वो तो perpendicular है motion. So there are only two forces that will be contributing to in this work done term. One is the work done due to weight, since weight is being vertically displaced between position 1 and 2. The other one is the force of friction, जिसकी वजह से work आएगा. As far as the work done due to NC is concerned, since NC is acting perpendicular to this displacement, so it should not be contributing towards the work done term. So अगर मैं broadly देखूं, आपके पास work done due to weight आएगा और आपके पास work done due to force of friction आ जाएगा. ठीक है? Okay. Now evaluating each of these terms one by one. Work done due to weight, as per our previous discussion, it would have a magnitude of W times delta Y, isn't it? Yes, sir. Okay, Yes. what is delta Y here? 20 sin 10. थोड़ा सा और से देख के मुझे बताएं. S sin 10 ये 20 वाला कौन था? सर वो velocity से Okay, so delta Y is basically S. It is basically S into sine of 10, isn't it? yes Yes, sir. Okay, so the magnitude of work done due to weight would be W into S sine 10. Should it be positive or negative? Positive, sir. Because this S sine 10 is acting downward, weight is also acting downward, so the work done due to weight is going to be a positive quantity, W into S into sine 10. Is this thing clear to all of you? yes sir Okay, coming to the next term of work done due to this force of friction. Okay, what should be this work done due to force of friction? It is going to be force of friction, which is mu NC. ये तो force of friction होगी. Work done के लिए मैं क्या करूँगा इसको? S से multiply So I'm going to multiply it with displacement Into S. S. So mu NC into S is going to be the work done due to force of friction. Should it be positive or negative? negative Since friction force is acting up the incline, displacement is down the incline, so the work done due to force of friction is going to be negative quantity. So overall, if I take a look at this equation, कितने unknowns हैं आपके पास? S unknown. Only one thing is unknown to you in this equation, that is this S. So once you solve this particular equation, you are going to get the value of S to be equal to 19.5 fit. Is this point clear to all of you? हमने पहले NC find out किया, which is W cos 10. Then we applied the principle of work and energy, work done due to weight, work done due to friction force with a negative sign. It will give us the value of S to be equal to 19.5 fit. Clear है? कोई confusion, कोई query जो आप पूछना चाहें? Clear. Okay. Let me ask you one question. What about instead of using this principle of work and energy, I'm going to use the equation of motion. Can I solve it using the equation of motion? Yes, sir. So equation of motion में apply करूंगा along the x-axis, y-axis के along तो already मैंने apply कर दी है. So applying it along the x-axis, summation fx equal to max. The forces which are acting along x-axis is going to be the component of weight, which is w sine of 10 with a positive sign. क्योंकि w को जब आप resolve करेंगे, so this is the component which is acting towards the positive x-axis, and force of friction which would be acting towards the negative x-axis. So w sine 10 minus mu nc should be equal to ma. तो आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं. So once you solve that equation, you will get the value of a to be equal to say capital A meter per second square. So acceleration की value आ गई. हमें s चाहिए. How we are going to relate this a with s then? देखेंगे कि acceleration constant है तो सर वो constant equation of motion use करेंगे. अच्छा, सबसे पहली बात, how you have judged that this acceleration is constant? सर वो force is constant है, m भी constant है. Okay, so इस केस में m constant है और w भी constant है और nc भी constant है, so it will give you a to be equal to a constant thing. So acceleration constant आ गई. अब constant acceleration के साथ आप क्या करेंगे s से relate करने के लिए? तो सर वो Without formula use solving- करेंगे सर equation of motion.
without Yeah, involving yes. time variable. So v square equal to v naught square plus 2a s minus s naught, ऐसे ही है. Yes, sir. तो आपके पास ये s माइनस s नॉट एक तरह से वो डेल्टा s या s है. a आप फाइंड आउट कर चुके हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन v नॉट कितना था आपके पास? दैट वाज 20 फीट पर सेकंड. v आपके पास 0 आ गया. सो वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट s to be equal to 19.5 फुट अगेन. सो इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो. अगर आप चाहें इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लेते, लेकिन चूंकि f v और s का डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको चाहिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको दे रहा होता है, सो आपने सिंगल स्टेप में सोल्यूशन निकाला. यहां आपको ये दो स्टेप्स करने पड़ते इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर जी. सर ये s cos थीटा नहीं होगा? क्या चीज? सर कह रहा हूँ जो हमने ax जो निकाला है वो वैसे फीट पर सेकंड स्क्वायर में आना चाहिए. सॉरी, मीटर पर सेकंड, सॉरी यूनिट्स मैंने गलत लिख दिया. इट इज गोइंग टू बी फीट पर सेकंड स्क्वायर. ओके. और Yes. सर ये जो आपने फार्मूला में s माइनस s नॉट लिखा है, तो ये s cos थीटा माइनस s नॉट cos थीटा नहीं आएगा? नहीं, देखिए cos इसलिए नहीं ले रहे because the axis which I am defining here are x axis to be the axis of this incline and y axis are being defined perpendicular to that x axis. So x axis मेरी conventional x axis नहीं है, ये down the incline axis को मैं x axis कह रहा हूँ. Okay, sorry. Okay, any other question which you want to ask regarding this example 14-2? Okay, so अब क्लास की चॉइस है. If you want me to have a break of say 10 minutes, हम ब्रेक कर सकते हैं. उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और फिर क्विज होगा, या ऑल्टरनेटली हम वो एक एग्जाम्पल अभी कर सकते हैं, फिर ब्रेक लेके फिर क्विज कंडक्ट कर सकते हैं. क्या चाहते हैं आप? एग्जांपल करा दें. एग्जाम्पल करा दें, उसके बाद ब्रेक और उसके बाद क्विज कर लें. Yes. इज Yes, द क्लास रीड विद दिस? Yes, sir. Okay, so moving on to the second example, which is example 14-4. थोड़ा सा गौर से इस एग्जाम्पल को देखें. बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और इसमें आपके वो स्प्रिंग वाले काफी कॉन्सेप्ट जो है वो चेक होंगे. Okay, let me first of all read the statement of this example. The platform P has negligible mass and is tied down so that the 0.4 meters long cords keep a 1 meter long spring compressed 0.6 meter when nothing is on the platform. इस जुमले को 2-3 दफा पढ़ें तब आपको ये जुमला समझ आएगा, और अगर ये जुमला आपको समझ आ गया तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा. So let me read it once again. You have a platform which has negligible mass and it is tied down so that the 0.4 meters long cords keep a 1 meter long spring compressed 0.6 meter when nothing is on the platform. Let me clear the screen और मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं. Okay, I hope this blank slide is clear to all of you. Yes, sir. Okay, इस जुमले को समझने के लिए हम करते क्या हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास से एक ग्राउंड है and we have got a spring which has an unstretched length of 1 meter. So the unstretched length of this spring is 1 meter. इसके अलावा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमने प्लेटफॉर्म P के साथ रिप्रेजेंट किया है, and this platform is being attached with these cords which have an overall length of 0.4 मीटर. यानी जब आप इस प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाएंगे तो ये 0.4 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दीज कॉर्ड्स जो कि इसके साथ अटैच हुई हुई हैं. आप करते क्या हैं कि आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके इस प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो रख देते हैं. अब ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की 1 मीटर थी, ये प्लेटफॉर्म के नीचे जब ये आएगा तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर बिकॉज ऑफ दीज कॉर्ड्स. सो कितना ये अपनी अनस्ट्रेच्ड लेंथ से कंप्रेस हुआ हुआ है? 0.6. 0.6. तो आपने इस स्प्रिंग को 0.6 मीटर कंप्रेस किया और इस प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो रख दिया. तो आई होप कि ये जुमला हर एक को क्लियर हो गया होगा. सर यानी कॉर्ड्स में फिर टेंशन भी होगी ना? देखें, कॉर्ड्स जो है वो 0.4 मीटर से ज्यादा जो है वो ऊपर नहीं जा सकती. ठीक है, तो यानी आप अगर स्प्रिंग को हटा दें तो जाहिर सी बात है ये प्लेटफॉर्म जमीन पे आके गिर जाएगा, लेकिन इस स्प्रिंग को यहाँ रखने की वजह से इट इज नॉट गोइंग टू मूव डाउन. मैक्सिमम ये जितना ऊपर जा सकता है इट इज 0.4 मीटर. तो एक तरह से स्प्रिंग इस स्टेज पे 0.6 मीटर जो है वो कंप्रेस हुआ होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर लेकिन स्टेटमेंट में तो दिया गिवन था कि प्लेटफॉर्म का मास नेग्लिजिबल है, तो ये फिर कंप्रेस क्यों कर रहे हैं स्प्रिंग को? प्लेटफॉर्म का मास तो नेग्लिजिबल है लेकिन कॉर्ड्स की लेंथ क्या है? 0.4 मीटर. यस सर. 0.4 मीटर से ऊपर मूव कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म? एक्सक्यूज मी सर. जी. सर ये जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा 0.6 मीटर
तो ये फिर अपनी स्प्रिंग की फोर्स भी लगेगी ना प्लेटफॉर्म पे, जो फिर कॉर्ड्स में टेंशन के तौर पे आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके लेकिन अब हो क्या रहा है, अब सवाल का अगला जुमला पढ़े हम। यहाँ तक ये चीज क्लियर है को ये पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। Okay, so moving on to the remaining statement. If a 2 kg block is placed on the platform and released from rest after the platform is pushed down 0.1 meters, determine the maximum height h which the block rises in air measured from ground. अब थोड़ा सा इस फिगर को दोबारा गौर से देखें। मैं करता क्या हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अदद ब्लॉक रखता हूं जिसका मैस 2 kg है। इस ब्लॉक को रखने के बाद मैं हाथ से इस पूरे के पूरे ब्लॉक और प्लेटफॉर्म को प्रेस करता हूं until this platform has moved 0.1 मीटर डाउनवर्ड। ठीक है, मैंने किया क्या कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अदद ब्लॉक रखा और उस पूरे सिस्टम को मैंने 0.1 मीटर डाउनवर्ड कंप्रेस किया अपने हाथ से, और यहां से जिसको मैं पोजीशन 1 कह रहा हूं, यहां इस पोजीशन से मैं इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करता हूं। यहां तक बात समझ आ गई है को? यस सर। यस सो पोजीशन 1 की अगर मैं बात करूं तो इस पोजीशन पे अब इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी जब मैंने इसको 0.1 प्रेस कर दी है? 0.3। So it is 0.3 meters now because I have further compressed this spring 0.1 meter. तो अब मेरे पास पोजीशन 1 के ऊपर जो स्प्रिंग की लेंथ है that is 0.3 meters. इस पोजीशन से मैं रेस्ट से अपना हाथ से जो फोर्स लगा रहा था उसको जो है वो रिलीज कर देता हूं। What would the spring force try to do now? Stretch outwards. Stretch outwards. So the spring is going to move upward in this direction. So the spring is going to move the platform upward in this direction. Platform 0.4 से ऊपर जा सकता है? नो सर। तो प्लेटफॉर्म 0.4 पे आके रुक जाएगा, लेकिन ब्लॉक तो प्लेटफॉर्म के साथ अटैच नहीं हुआ हुआ, ऐसा ही है? यस सर। सो ब्लॉक हो Yes. सकता है थोड़ा सा हवा में राइज करे, ऐसा ही है? यस सर। ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये ब्लॉक हवा में कितना जो है वो राइज करता है बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। सो एक तरह से मेरी पोजीशन 2 जो है वो ये पोजीशन है जिसमें ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा और फिर डेफिनेटली मोमेंटेरियली रुकने के बाद इट इज गोइंग टू कम डाउन अगेन एंड फॉल ऑन द प्लेटफॉर्म। सो अवर पोजीशन 1 इज द पोजीशन जहां मैं रेस्ट से इसको रिलीज कर रहा हूं एंड पोजीशन 2 इज द पोजीशन जिस पे ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है। आई नीड टू फाइंड आउट कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। कोई डाउट, कोई क्यूरी इस क्वेश्चन के हवाले से? नो सर। Okay, so coming towards the solution of this problem. Okay, applying the principle of work and energy here, T1 summation U1 to 2 should be equal to T2, that is the initial kinetic energy of the block. We are applying the principle of work and energy on the block. So the initial kinetic energy of the block plus work done by all the forces on the block should be equal to the final kinetic energy of the block. Okay, the first question is, what is the initial kinetic energy of the block at position 1? 0. Since the block is being released from rest, so the initial kinetic energy is going to be 0. What about the final kinetic energy once the block has attained maximum height? 0. Since the block has attained maximum height, so momentarily its velocity would be equal to 0 at that height. Therefore, T2 would also be equal to 0. 0. Is this point clear to all of you? T1 and T2 दोनों आपके पास 0 हैं. यस सर। Okay. So now coming to the term of work done between position 1 and 2. Between position 1 and 2, if we are going to draw the free body diagram of this block, so we are going to get the forces on this block. One is the force of weight, which is acting downward. The other one is going to be a spring force, which is going to act in this direction, isn't it? यस सर। Okay, so these are the two forces that would be contributing towards the work done term. One is UW, that is work done due to weight. The other one is U spring, which is the work done due to spring force. एक एक करके जरा हम इन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आसान वर्क डन वाली टर्म से। वर्क डन ड्यू टू वेट वुड हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ W टाइम्स डेल्टा Y, ऐसा ही है? यस सर। यस Okay, W times delta Y. What is this delta Y here? थोड़ा सा गौर से इसको देखें and try to tell me what is this delta Y, which is the displacement of this weight. So this is basically delta Y, isn't it? जो मैंने अभी green से show किया है figure पे. Can you all see that Yes, sir. delta Y? Yes, sir. यस
So what should be this delta y here? Can you identify it and relate with H minus 0.4. H minus 0.3. So it is going to be h minus 0.3. As per the geometry, this delta y is h minus 0.3. Weight हमें given है 2 kg, उसका mass है, so we can calculate that weight. What should be the sign of this work done due to weight? Positive, negative? Negative. Since weight and delta y are opposite to each other, so work done due to weight is going to be minus Negative w times h minus 0.3. So I hope that this point is clear to all of you. Work done due to weight हर एक को clear है? Yes, sir. Okay, now coming to the second term of work done, which is work done due to this spring force. By formula, this have a negative sign outside this bracket, minus half k s2 square minus half k s1 square. ऐसा ही है work done का formula spring का minus half k s2 square minus half k s1 square. Now my question is, can you identify s1 and s2 here? पहले हम s1 से स्टार्ट करें. पोजीशन 1 के ऊपर ये जो स्प्रिंग है ये अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है? 0.7. 0.4. 0.4 वाला कौन है? तारिक सर. तारिक. ओके, देखें S1 से मुराद क्या है कि पोजीशन 1 जो कि आपकी ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पे स्प्रिंग अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है? यहाँ स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? 0.7. टोटल स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी? 1. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई स्प्रिंग की अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से? इट इज गोइंग टू बी 0.7. या अगर हम L minus L naught वाली टर्म में बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 0.3 minus 1 which is minus 0.7. माइनस साइन मैंने यहाँ क्यों नहीं कंसीडर करा? क्योंकि S1 स्क्वायर है, तो मैं minus 0.7 लिखूं या प्लस 0.7 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो स्प्रिंग की अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0.7 meters as S1. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई किसी को S1 के हवाले से कोई Yes, sir. डाउट? ओके, नाउ कमिंग टू S2. वेट तो हाइट एज तक राइज करेगा, लेकिन स्प्रिंग तो अपनी इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा. वो तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, बेशक वो ब्लॉक राइज कर जाए ऊपर. सो पोजीशन 2 के ऊपर S2 क्या होनी चाहिए? 0.6. इट इज गोइंग टू बी, अगर हम साइंस की फॉर्म में बात करें तो माइनस 0.6 होगी, यानी L2 माइनस L नॉट. L2 आपके पास 0.4 है, L नॉट 1 है, so 0.4 minus 1 which would be minus 0.6. but since it is S2 square, so वो नेगेटिव साइन मैटर नहीं करता. आपके पास ये S2 0.6 आ गई, S1 आपके पास 0.7 आ जाएगा. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so these are the two terms जो कि involve थी work done में. One is the weight की वजह से work, the other one is the work done due to spring force. So all other things are known to us except this h here. So once we solve it, we are going to get the value of h to be equal to 0.963 meters. Is it clear to all of you? Yes, sir. कोई क्वेश्चन आपका जो कि आप इस एग्जांपल के हवाले से करना चाहें? सर एक क्वेश्चन है. जी पूछें. सर ये आपने हमें इसमें शुरू में एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे फोर्स एस यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वी इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे हम एनर्जी वाला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे. बिल्कुल ठीक तो है. सर इसमें जैसे वेलोसिटी का तो कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो हमें कैसे वो हिंट मिलेगी कि हमें यहाँ पे वर्क एनर्जी लगाना चाहिए? वेलोसिटी की इन्वॉल्वमेंट तो थी, यानी जीरो वेलोसिटी यहाँ थी, जीरो वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी. तो वेलोसिटी इन्वॉल्व तो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो है उन दो पोजीशंस पे जिसपे मैं कंसीडर कर रहा हूँ. इन दो पोजीशंस के दौरान या दरमियान में कहीं ना कहीं डेफिनेटली वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी. तो वेलोसिटी इन्वॉल्व है, यहाँ फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट एच जो है वो इन्वॉल्व हो रही है. सो आपके पास एफ, वी और एस तीनों चीजें यहाँ इन्वॉल्व हो रही हैं. इस वजह से आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. ऑल्दो आप चाहते तो इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको करना चाहते तो हो सकता था. एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो वर्क डन ड्यू टू हैंड कंप्रेशन है वो हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया? देखें, आपने इसलिए इंक्लूड नहीं किया, उसकी वजह यह है कि आपकी पोजीशन 1 जो डिफाइन है वो पोजीशन है जिसपे से आप अपना हाथ हटा लेते हैं, यानी आपका पोजीशन 1 के ऊपर वो हैंड वाली फोर्स हट गई है, तो इसलिए वो शामिल नहीं हुई. क्वेश्चन की वर्डिंग अगर आप पढ़ें तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट आफ्टर द प्लेटफॉर्म इज पुश्ड डाउन 0.1 मीटर, के आपने हाथ से पुश तो कर दिया उसको 0.1 मीटर, लेकिन फिर आप रेस्ट से रिलीज करते हैं उसको, यानी अपनी फोर्स हटा लेते हैं. तो आपका पोजीशन वो है जब आप अपना हाथ हटा चुके हैं. सही सर, थोड़े. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन?